First question, any fixed thing you eat for dinner, breakfast and lunch? Fixed thing, हाँ. See, breakfast का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, I eat a lot of rice in lunch and dinner, तो वो होता ही है, उसके साथ में accompaniments होते हैं. Okay. What you eat after doing morning workouts? I can eat anything. अभी मुझे नया नया शौक चढ़ा था pancakes खाने का, तो मैंने pancakes बना के खाना शुरू किया है. So I would love a couple of pancakes after my workout. Oh, wow. What do you have in your cheat meal days? That's an amazing question. If I have cheese in my fridge, तो वो सारा का सारा मैं कोई तो कुछ टोस्टाडी बना के, कुछ टोस्ट करके ब्रेड पे पिज्जा टाइप बना के, बहुत सारा चीज डाल के, बहुत सारा मेयो डाल के ऐसे खा जाऊंगी. Any fixed thing you eat or drink after having dinner? मतलब जैसे वो स्वीट टूथ होता है ना कुछ कुछ लोगों का कि 8 बजे रात का डिनर कर लिया, फिर रात को आइसक्रीम खा, गुलाब जामुन खा लिया. So what is your sweet tooth? अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं पक्का गुलाब जामुन खाऊंगी. बट अगर नहीं है, then I would like to drink something hot, maybe hot chocolate, और वो पी के मैं फिर आराम से सो जाऊंगी चैन से. So yeah, something like that. Okay. Do you follow any timetable for your breakfast, lunch and dinner? Like around this time will have my meals. मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं सुबह के 7 बजे इतना, फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ऐसा कुछ है? मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ. So if I then तक और समझिए ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर 2:33 तक I have my lunch and then I take another meal, कुछ तो इवनिंग स्नैक जैसा रखती हूँ मैं, तो 6 बजे के करीब होता है, and then फिर 10:30 बजे के करीब I have my dinner. Okay, okay. What you basically avoid having in your diet plan? What do I avoid? I'm a foodie, so it's a very tough question for me because I usually do not avoid food. But yeah, if you've asked me, I don't know. I don't like some vegetables. Maybe I can name them. टिंडा मुझे पसंद नहीं है. Do you know टिंडा क्या? बैंगन तो मुझे बहुत पसंद है. टिंडा ऐसा कुछ एक ग्रीन सब्जी होता है, बटन बटन जैसा. अब मुझे पता नहीं क्यों वो अच्छा लगता है. मुझे तुरई भी अच्छी नहीं लगती है. तुरई? Yeah, I hope आपको पता होगा वो कौन सी सब्जी होती है. Of course. अच्छा, ठीक है. Dark green color लंबी सी आती है. Yeah, because it has different names in different places. I'm from Punjab, तो वहाँ पे तो तोरी बोलते हैं. नहीं, I'm from North India, so मुझे आती है. हाँ, cool then, cool. Okay, अगला question. What or which are you? Is your favorite sweets chocolates या फिर something रसगुल्ला, something जलेबी? I personally love spongy रसगुल्ला. मैं कभी भी खा सकती हूँ, कितने भी, और एक बार खाऊंगी तो 5-6. I'm not kidding. एक बार मैं कहीं शो करने जा रही थी मेरे बैंड के साथ, और एयरपोर्ट पे हमें पता चला फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, तो मुझे एक शॉप दिखा वहां पे, मैंने एक टिन खरीद लिया. 20-25 रसगुल्ले थे उसमें, और मैंने बोला मैं फ्लाइट में तो लेके नहीं जा सकती, तो मैंने सबको बोला भाई लोग हमें ये खत्म करना पड़ेगा, मैं लेके आ रही हूँ बिकॉज आई हैव टू ईट. आई वाज क्रेविंग सो मच. फिर हम सब लोग रसगुल्ले खा के गए फ्लाइट में. Oh my God, crazy. What drink do you prefer to have if you are chilling at beach? Beer, wine, non-alcoholic? Yeah, some kind of a cocktail would do actually. I would mocktail mind. Kind of? A mocktail or a cocktail even. I like wines. I like a few kind of wines, maybe white wine mein kuch. So yeah. Okay. Yep. If you are at a party, which drink you prefer the most to have for you? If I'm partying, yeah, some white wine will do. Gives you a good high, and I don't know. I kind of like it. Okay. If you are at party, same question again. Repeating another one. People generally say have heavy breakfast, skip lunch, or have salad, juices, something, and then have heavy dinner. What's your take? So like eating heavy dinner and stuff like that. Yeah. Heavy breakfast, heavy dinner.
Yeah, I mean, I would not suggest heavy dinner for myself. मैं वो नहीं लेती because then फिर मुश्किल हो जाता है digestion में and all. So, but then yes, breakfast के लिए you can have anything. So, since I'm from Punjab, तो मैं तो पराठे खाती हूँ कभी कभी. कभी मैं पूरी खा लेती हूँ, पूरी आलू, कभी कुछ भी. So it's quite heavy. Yeah. Okay. People generally says that one should have fruits before lunch or dinner because it increases hunger. What's your take on this? So I believe मुझे फ्रूट्स खाना दिन के जैसे दोपहर का टाइम जैसे अभी का भी हो गया आप अभी समझ लीजिए लंच करने के बाद if I want to have something sweet then I would prefer a sweet fruit maybe जैसे अभी आजकल खरबूजा आया हुआ है हाँ मेलन आया मेलन हुआ है बहुत चल रहे हैं जी. so I just love nice melon if it's very sweet and good so I love it I love that तो वो खाना मुझे पसंद है मैंगोज आएंगे तब तो मैंगो undoubtedly so yeah I think दिन के टाइम पे And mangoes and melons are your favorite fruits? I can say that, yeah. अच्छा मुझे लगा स्ट्रॉबेरी होगा. स्ट्रॉबेरी आई लव स्ट्रॉबेरी एज अ फ्लेवर बट उसको कच्चा खाने में मुझे थोड़ा खट्टा लगता है सो अगर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मतलब मिल्क शेक का पूछे then I will always order strawberry milkshake. I love strawberry ice cream. Okay, okay. Last question. What three things that one should consume and avoid to improve their stamina immunity? Okay. So I think you should have lemon and water. मतलब lemon water उसमें थोड़ा सा salt डाल के. So I think it you know helps you digest the food also and then gives you instant energy. You can put some sugar like I really nice like I like lemonade with my sugar and salt. So that gives me good boost. And then you can have some black coffee if you like. I personally do not like the taste. It's a little bitter for me. So yeah. Okay. Thank you so much, Jyotika ji. Thank you so much for having us. And lovely song again. Congratulations again. And ढेर सारा success मिले आपको. All the very best. Thank you so much. It was really nice talking to you.